Good morning students. Welcome back again to our MS YouTube channel. Today this is the part 4th video of the same chapter number 10, respiration in organisms. Up to part 3 video I have covered many topics like what is the definition of word respiration, why respiration process is very useful for human beings, for all living organisms, even as we are getting energy from this process of respiration, as in this process 4 days breakdown and we are getting energy to release energy, so we are getting energy for doing the work. Then I have explained you about 3 type of respiration: cellular respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. Then I have started anaerobes, means that kind of organism which are breathing without oxygen, means they are living anaerobically, so they are known as anaerobes, and they are used to make wine and the beer. Then I have covered that about the muscles, that our muscles, the body, the muscles which are there present in our body are breathing anaerobically. Why they are breathing anaerobically? Because when we are doing lot of work, when we are doing lot of exercise, cycling, walking, running, so the supply of oxygen is reduced in our body. The supply of oxygen is reduced in our body. That's why our muscle cells started respire anaerobically, right? And sometimes muscle cramps are also there. Muscle cramps हो जाते हैं हमको. I explained the meaning of cramps, means a sudden pain in the muscle. Sudden pain हो जाता है muscle में, उसको हम cramps बोलते हैं. Then how we are getting relief from that cramps? By to take a bath in a hot water or from a massage, we can get relief from the muscle cramps. Now we are moving forward to this chapter. Today in this video I am going to teach you about the very important system of our body, that is human respiratory system. First of all, as I will want to give a basic knowledge about the respiratory system that you already studied in your lower grades. Our respiratory system mainly consists of 3 organs. First is nose, then windpipe and the lungs. These are not only 3 main organs included in this, but as for general knowledge I am telling to you: nose, windpipe and lungs. Respiratory system works for our body. ये breathing करने में हमको help करता है, right? We are breathing oxygen, तो oxygen we are breathing, inhaling from our nose. From nose, that same air, the same oxygen goes into the windpipe. You know, in our neck we are having 2 pipes, windpipe and food pipe. Food pipe is also known as esophagus. Food pipe is also known as esophagus. The oxygen which we are breathing goes into the windpipe, and from windpipe it goes into the lungs, and lungs gives it oxygen to the whole parts of the body and ultimately to each the cell. Right? This was the introduction of respiratory system. It consists 3 organs like nose, windpipe and the lungs. As human respiratory system is very important for us. This is all functions are important for us, but respiratory system is more important because हम लोग respire इससे कर रहे हैं, हम लोग सांस ही इससे ले रहे हैं. If respiratory system will not work properly in the human body, then we are not able to survive, right? Now see here, during inhalation I have told you, inhalation means to breathe in. During inhalation our lungs, हमारी lungs जो होती है, during inhalation our lungs expand means increase in size and then come back to the original state as the air moves out during exhalation. Lungs हमारा expand होते हैं तभी inhalation के टाइम पे expand होते हैं and come back, and the lungs come back to the original state. Our lungs come back to the original state as the airs move out during exhalation. This you are thinking, sir, it's very easy point. Yes, I know it is easy point, but explanation is necessary. Inhalation के time हमारी lungs expand होती है, means increase in size, and then come back to the original state. वो फिर अपनी lungs अपनी original state पे आ जाती है as the air moves out during exhalation. जैसे एक्सेलेरेशन करते थे हम लोग, हमारी एयर है
हमारी लंग्स अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाती है। इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी enhance the rate of breathing. ऐसा we told you when we are doing lot of work, जब हम लोग बहुत सारा काम करते हैं तो our muscles respire anaerobically, हमारी muscles anaerobically respire करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सेम पॉइंट इज देयर, इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी हमारा इंक्रीज होगी तो इट इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ ब्रीथिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ ब्रीथिंग? First of all, for that I want to clear you the meaning of breathing rate. The number of times a person breathe in 1 minute. I am repeating again. The number of times a person breathe in 1 minute, it is called breathing rate. The number of times a person breathe in 1 minute, it is known as breathing rate. Suppose in 1 minute I am breathing 10 times. Suppose I am in 1 minute I am breathing 10 times, and someone is asking me how many times you are breathing in 10 minutes. What I will say 100 times. What I will say 100 times, because in 1 minute I am breathing 10 minutes, so 10 times are 100. So this was definition of breathing rate. मैं फिर से बोल दे रहा हूँ एक बार. The number of times a person breathe in 1 minute, it is known as breathing rate. उसको हम क्या बोलते हैं? Breathing rate बोलते हैं. Now on an average an adult human being at least breathe in and out 15 to 18 times in a minute. Average में अगर हम देखें, I am erasing this point because आपको क्लियर हो गया, inhalation में हमारे lungs expand होते हैं और they are coming to the original state at the time of exhalation. Now I am telling you about how many average time we are breathing and how many average time we are breathing when we are doing lot of exercise. On an average, an adult human being at least breathe 15 to 18 times. 15 to 18 times in a minute. During heavy exercise, the breathing rate can increase up to 25 times per minute. As a normal we are breathing, so it is 15 to 18. But if we are doing lot of exercise, so our breathing rate increases to 25 per minute. While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breath and thus we inhale more oxygen. हम breathe भी fast करते हैं, इसके लिए हमको inhale oxygen ज़्यादा करना पड़ता है when we are doing a lot of exercise. So means 15 to 18 times the average that we are breathing in 1 minute, but we are doing lot of exercise. So it increased, that I have experienced this point only, increased physical activity, increase the rate of breathing. So here I have shown you कि यहाँ पर हमारा ये एवरेज में था और यहाँ पर हमारा ये फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद ब्रीथिंग हुआ. अंडरस्टूड? नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू, नाउ हाउ मच परसेंटेज वी आर ब्रीथिंग, हाउ मच इनहेलिंग वी आर डूइंग ऑक्सीजन एंड हाउ मच आर लंग्स एक्सहेलिंग द CO2. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग टू यू, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड. जस्ट लुक एट द बोर्ड प्रॉपर्ली. Percentage of oxygen and carbon dioxide CO2. Percentage of oxygen and carbon dioxide in inhaled and exhaled air. In inhaled and exhale air. Now you are thinking, sir, what you are explaining to us? This is I am explaining you about percentage, that how much percentage our lungs कितना inhale करते हैं ऑक्सीजन एंड कितना वो exhale करते हैं CO2. ठीक है, तो let's see to the now percentage. Suppose यहाँ I have written lungs, ये मेरा lungs का कॉलम हो गया. यहाँ हमारे lungs कितना exhale कर रहे हैं, that I will write, and here I will write how much they are inhale. How much our lungs inhale and how much our lungs exhale CO2, that means carbon dioxide. अब lungs की हम बात करें inhale की, तो 21% of O2 they are inhaling. 21% of O2
2 they are inhaling 21% of oxygen. And how much they are inhaling CO2? 0.04% of CO2. ये हम बात कर रहे हैं इनहेल करने की. हमारे लंग्स जो है वो 21% ऑफ ऑक्सीजन ब्रीथ करती है एंड 0.04% वो CO2 इनहेल करती है. दिस इज अबाउट इनहेलेशन. नाउ कमिंग टू द एक्सहेलेशन, कितना वो एक्सहेल कर रहा है? 10.4 of O2 means oxygen they are exhaling and 4.4 of CO2. This is what a percentage chart I have explained you about the inhaled and exhaled air. I am explaining again to you. These, suppose this is our lungs. I am highlighting this lungs with a pink chalk for a better understanding. ये हमारे lungs हो गए. अभी हम एक्सेल की बात करेंगे सबसे पहले. ठीक है, एक्सेल मींस टू गिव आउट. तो लंग्स कितना O2 गिव आउट कर रहे हैं? 10.4 और यहाँ पे ये 4.4 कितना CO2. इनहेलेशन कितना हो रहा है? ये अभी हम इनहेल पे आ गए. इनहेलेशन 21% ऑफ O2 एंड 0.04 ऑफ CO2. 10.4% and here 4.4%. So this is a chart that you have to keep in your mind. 21% of O2 इनहेल किया, 0.04 CO2 भी इनहेल किया, 10.4 एक्सहेल किया एंड 4 of CO2 भी इन्होंने लंग्स में एक्सहेल किया. Normally we take in air through our nostrils. See, these are our nostrils. हम लोग यहां से एयर ब्रीथ कर रहे हैं. So when we inhale air, it passes our nostril into nasal cavity. हम जैसे ही नॉस्ट्रिल से एयर ब्रीथ, ऑक्सीजन ब्रीथ किया, इट पासेस थ्रू नेसल कैविटी. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर यू दैट वी आर हैविंग 2 पाइप्स इन अवर नेक. 2 पाइप्स होते हैं. एक आपको दिख रहा है, दिस आर विंड पाइप एंड अनदर हमारा पाइप होता है फूड पाइप. विंड पाइप में यहां से देखो आपका ऑक्सीजन जा रहा है. वी हैव इनहेल्ड ऑक्सीजन, इट गोज थ्रू द विंड पाइप. फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेस थ्रू द लंग्स. यहां से इस विंड पाइप से, ये हमारे 2 लंग्स है, राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग, ये पूरी ऑक्सीजन वहां पर जाती है. लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. हमारे लंग्स कहां प्रेजेंट होते हैं? हमारी चेस्ट कैविटी में. आपको दिख रहा है हमारा कौन सा पोर्शन है? ये चेस्ट कैविटी का पोर्शन है. तो लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. अ लार्ज मस्क्यूलर, दिस कैविटी सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स. अब ये लंग्स कैसे कवर होते हैं? रिब्स से. नाउ यू आर थिंकिंग सर व्हाट आर द रिब्स? रिब्स में 24 बोन्स होते हैं. In ribs there are 24 bones. They are arranged in the pair of 12. वो 12 के पेयर में दिख रहे हैं. And you are clearly see the image of this. रिब केज की आपको फोटो दिख रही है यहाँ पे. उसमें 24 बोन्स है और 12 के पेयर्स में वो अरेंज किए हुए हैं. A large muscular sheet. एक लार्ज, ये आपको दिख रही है लास्ट में, ये दिस इज द ब्रॉड पोर्शन. आपको ब्रॉड पोर्शन दिख रहा है. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर बॉडी बट वी आर नॉट एबल टू सी दिस, विच हम देख नहीं सकते, बट थ्रू मॉडल वी आर लुकिंग दिस. तो जो लार्ज पार्ट है ये, अ लार्ज मस्कुलर शीट इज कॉल्ड डायफ्राम. इट इज द, ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं. नाउ लेट्स सी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं. एक बार फिर से देख रहे हैं हम लोग. सबसे पहले आपको मैंने बोला कि हमारा नेसल पैसेज है, ये यहां से नॉस्ट्रिल्स में जो हवा जा रही है. देन ये हमारा विंड पाइप था. देन हियर दिस इज द कलर यू आर सीइंग, दिस इज नोन एज ट्रिकिया. इसको हम ट्रिकिया बोलते हैं. देन हमारे ये लंग्स थे. देन आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू अबाउट रिब्स. सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस सिस्टम, दैट हाउ वी आर ब्रीथिंग ऑक्सीजन.